Rahim. My dear students, our today's topic is a derivation of the expression for the equilibrium constant, which is called Kc. We have two types of journal reactions. The one is without any coefficient, A plus B, C plus D. These are reactants and these are called chemical species. A, capital B, capital C, capital D, they are chemical species. And here we have chemical species as well as this coefficient. During the balancing of chemical reactions, we use these coefficients and they are always in front of the chemical species. Here the chemical species is capital A and its balancing coefficient is A, small a. Same is here. Capital B is a chemical species and B is the coefficient. These are also called stoichiometric coefficient. During chemical reactions, the mass remains constant and for this purpose, the chemical equations are made balanced. This is the representation of a chemical reaction and this is called chemical equation. A chemical equation has three things. The one is reactants, another is products, and the arrows between are an arrow between the two, reactants and products. So we have three things: reactants, products, and arrows. In this particular reaction, we have forward reaction as well as a reverse reaction because it is reversible reaction. This double arrow and this double arrow, they show that these are reversible reaction. Yesterday, we have discussed law of mass action, which was presented by two Norwegian chemists. So, a rate according to law of mass action, if I apply law on this equation, for this forward reaction, I can write rate of forward reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants. These are reactants. There is multiplication sign between these two. So this is a product of active masses of A and B, or we can say the molar concentration of A and molar concentration of B. The rate of forward reaction can be represented by RF. Same sign is used. They are same. For this rate of forward reaction, I can write RF. R is reaction or rate and F is for forward, rate of forward reaction. Then multiplication of A and B. So RF is equal to KF into A into B, or the product of A and B, or the active masses of A and B are multiplying. हमने उस रिएक्शन जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें यह था कि रिएक्टेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहे थे, लेकिन एक वक्त फिर ऐसा आया था कि उसके बाद रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में मजीद कमी नहीं हो रही थी
और फिर हमने कहा था कि बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बन जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि इसमें मज़ीद कमी नहीं आ रही, इसलिए उसको हम फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसके एफ इज फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं इसको मैंने लिया है तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर बैलेंसिंग के लिए हमने डिफरेंट डिजिट्स का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स है, तो फिर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए। वो जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंट या पावर में आ जाएगा। जिस तरह बी के सामने स्मॉल बी है, बी इज अ केमिकल स्पीशी एंड दिस बी इज कोएफिशिएंट, तो वो कोएफिशिएंट जो है वो फिर पावर में आ जाएगा। अगेन बिल्कुल इसी तरह के आर एफ इज रेट कांस्टेंट, rate of reaction for forward reaction, not constant. This is rate of forward reaction directly proportional again to this. Instead of this, I have written RF. फिर वही RF is equal to, जब कहीं हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसके जगह हम दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, ये is equal to और एक कांस्टेंट। So here again Kf is used as a rate constant, लेकिन forward rate constant, और ये molar constant. So ये product of A and B and raised to their powers. A and B, the small they are coefficient. तो ये तो हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है। अब अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन, the products are recombining and they are producing reactants, तो फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। Product of products, C and D they are products, और मल्टीप्लाई हो कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और या इंस्टेड ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आई कैन राइट आर आर, दिस स्मॉल आर इज फॉर रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of active masses of products। यहां भी वही है कि आर आर इज इक्वल टू के आर। अब के आर जो है ये रेट कांस्टेंट है फॉर द रिवर्स रिएक्शन। उसमें भी मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं इन द क्लोज कंटेनर, द रिएक्शन इज रिवर्सेबल, तो फिर कुछ वक्त के बाद रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसमें जितनी यानी इंक्रीज उसमें जितना हुआ था, एक वक्त आएगा कि मजीद इंक्रीज प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में नहीं होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज के आर, जो कि कांस्टेंट है। तो ये इस जर्नल रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और रिवर्स रिएक्शन के लिए। और अगर मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये भी एक जर्नल रिएक्शन है, इसमें कोफिशिएंट का इस्तेमाल हुआ है ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, तो उसमें ए और बी, तो फॉरवर्ड तो हम लिख चुके हैं और मैं इसके लिए डायरेक्ट ये लिख रहा हूं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू, अब यहां पर जब हम ये कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था
टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन रेज टू पावर C एंड D अपने अपने, यानी ये केमिकल स्पीशी है और ये इसका कोएफिशिएंट है, ये केमिकल स्पीशी है और ये इसका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ तक तो हम ये कर रहे हैं कि फॉरवर्ड और रिएक्शन, लेकिन अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसकी तरफ जाएंगे।